Hello students, my name is Pavneet and welcome to my channel IELTS with Pavneet. Today I've got a fun lesson for you. 8 beautifully descriptive idioms that you could use to refer to people. These idioms act as nouns in English sentences and there are brilliant entertaining ways to refer to people when you speak. Especially if you want to achieve higher grades in IELTS speaking test, you have to use these kind of idiomatic expressions. So there are 8 English idioms in this lesson. So what I recommend is not to try and learn all of them at once. But as you are watching the video, take notes as well that you can use to describe people or refer to people in your life, like friends, family members, neighbors, and even colleagues. When I'm talking and I'm introducing each idiom, if someone pops into your head and you think, oh, that's so and so, so this is a really good method to learn an idiomatic expression because you start associating the idiom and the meaning with someone who is present in your life. That's make it easy for you to remember. I've also got some homework for you. When you finish watching this lesson, write a short paragraph about these people in your life, add it down into the comment section below so that I can read about all of these characters, but also share a little bit of feedback or maybe make some corrections if you need it. So let's move on to your first idiomatic expression, and that is a lone wolf. Let's pronounce it again. You have to pronounce a lone wolf. This is a person who likes walking or likes doing things without other people. So they are quite independent and they are quite happy to be on their own. In fact, a lone wolf probably prefers to be on their own. चलो अभी अपने इसको हिंदी में अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो अ लोन वुल्फ का मीनिंग होता है कोई ऐसा पर्सन जिसको इंडिपेंडेंट रहना पसंद होता है, जो ऑलवेज अपनी ही कंपनी को एंजॉय करता है. उसको ग्रुप में काम करना या ग्रुप को एंजॉय करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता. ठीक है. Let's take an example. You can say, John is a bit of a lone wolf. He prefers to spend his holiday in the mountains or hiking alone. Next up, we have a party animal. I'll repeat it again, a party animal. This is a person who enjoys parties and they go to as many parties as they can. They're always out and about. They love staying up late, dancing, and having a good time. They're really a party animal. They can't stop that particular thing. So let's take an example. You can say Sarah went to 3 parties tonight. She is such a party animal. अभी हिंदी में देख लेते हैं. पार्टी एनिमल होता है जब अपने बात कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन की कि लाइक जिसको पार्टीज वगैरह करना बहुत ही पसंद होता है, जिसको रात को देर तक जागना पसंद होता है, डांस करना पसंद होता है, लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना पसंद होता है और वो पार्टीज़ में बहुत ही जाना का जिसको पार्टीज़ में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है. जैसे अपने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया. सो मैंने कहा सारा वेंट टू 3 parties टुनाइट. शी इज़ सच अ पार्टी एनिमल. Let's move on to your next idiomatic expression, and that is culture vulture. You have to say culture vulture. So this idiom is a little outdated, but still it appears really frequently in media, literature, and in IELTS speaking test. So it's definitely one to be aware of. So what's the culture vulture? It's someone who really loves culture in all forms. They can't get enough of the art and theater and literature and music, all of those things. So अभी हिंदी में देख लेते हैं. कल्चर वल्चर ऐसा कोई पर्सन होता है जिसको आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. आर्ट में, थिएटर में, म्यूज़िक में, हर एक टाइप की चीज़ उसको पसंद होती है. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने कहा ही इज़ अ बिट ऑफ ए कल्चर वल्चर, ऑलवेज आउट एट गैलरीज एंड थिएटर्स. So let's move on to your next idiomatic expression, and that is an early bird. I think this is probably one of the very first idioms that you ever learned, right? So an early bird is someone who is early, usually gets up early in the morning, or they are awake as the sun comes up. Let's take an example. So you can say Sarah is an early bird. She rises every morning at 5 a.m. सो अर्ली बर्ड होता है जो सुबह बहुत ही जल्दी उठता है, अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता है, उसको कहा जाता है अर्ली बर्ड. नाउ डू यू नो द अपोजिट ऑफ एन अर्ली बर्ड? वेल, इट्स अ नाइट आउल, ऑफ कोर्स. एंड नाइट आउल आर दोज पर्सन who feels like they function better during the night. They prefer to be awake at night, not in the morning.
So what about you? Are you a night person, or are you a night owl? Are you a night owl or an early bird? Your next idiomatic expression is go getter. A go getter, say it with me, a go getter. A go getter. A go getter is someone who is ambitious. They pursue their goals, they know what they want, and they go after it. They are go getter. So it's really a positive idiomatic expression. बेसिकली अ गो गेटर वो पर्सन होता है जो कि बहुत ही लाइक उसको पता होता है मेरा गोल कौन सा है। और जैसे कि अभी आपका गोल है कनाडा जाना या ऑस्ट्रेलिया जाना, अभी आपको पता है कि आपका गोल क्या है। सो अभी आप बहुत ही हार्ड वर्क करोगे उस गोल को अचीव करने के लिए। सो आप क्या हो जाओगे, गो गेटर हो जाओगे। ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं, अपने कहेंगे वी ओनली रिक्रूट गो गेटर हु विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कंपनीज डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। A jack of all trades is someone who is really good at doing several different jobs instead of only being specialized in one thing. From designing to construction, Frank can do it all. He is such a jack of all trades. सो अभी देखो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो सारी ही चीज़ों में अच्छा होता है। अभी आप थोड़े से अच्छे हो लाइक रीडिंग में, थोड़े से अच्छे हो आप लिसनिंग में, थोड़े से अच्छे हो आप राइटिंग में, एंड थोड़े से अच्छे हो आप स्पीकिंग में। सो आपको क्या कहा जाएगा? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ओके। ऐसे ही अगर आप किसी वर्क को लेकर चल रहे हो कि आप डिज़ाइनिंग में भी अच्छे हो, कंस्ट्रक्शन में वर्क में भी अच्छे हो, आपको फिक्सिंग करना भी आता है, आपको रूफ्स वगैरह सेटल करनी भी आती हैं, तो आपको अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं बट आप स्पेशलाइज नहीं हो जस्ट एक सिंगल थिंग में, देन आपको क्या कहा जाएगा? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नेक्स्ट वन इज पैनी पिचर। अ पैनी पिचर रेफर्स टू समवन हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट द मनी दैट दे स्पेंड। पैनी पिचर ऐसा कोई आदमी होता है लाइक जो ऑलवेज केयरफुल रहता है, जो मनी वो स्पेंड करता है। काइंड ऑफ अपने कह सकते हैं जिसको हिंदी में कहा जाता है कंजूस, उसके लिए अपने यूज़ कर सकते हैं पैनी पिचर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी कैन से सारा's rich uncle was such a penny pitcher that he used to give her a pencil for her birthday. Okay, so these are 8 idiomatic expressions that I have explained in my video. So if you find this particular lesson quite interesting, please do like and share my video, as well as if you want to get more videos, then subscribe my channel as well. There are a lot of videos that is about to come, so stay tuned.